तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे थे ना, हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे थे। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हमने लास्ट पॉइंट क्या किया था बताएंगे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट पॉइंट क्या किया था बताइए ना। With the help of larger subunit and riboforine, larger subunit and riboforine helps in attachment. Protein riboforine helps in attachment. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मैंने कहा था लिख लीजिए, हाँ बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लिख लीजिए। इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, in rough endoplasmic reticulum, ribosome is attached through its larger subunit. Ribosome is attached through its larger subunit. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Ribosome is attached with the help of a protein. Ribosome is attached with the help of a protein, riboforine, with the help of a protein, riboforine. ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, functions of endoplasmic reticulum. functions of endoplasmic reticulum. ठीक है, तो पहले हम लोग कॉमन फंक्शन लिखेंगे जो कि बोथ RER, ओके, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है मैंने, लिख लीजिए हेडिंग, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम लोग, ठीक है, कॉमन फंक्शन लिखेंगे जो कि RER और SCR दोनों करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग RER और SCR का अलग अलग फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, राइट डाउन। फर्स्ट लिखिए कॉमन फंक्शन, फर्स्ट लिखिए कॉमन फंक्शन। पहला कॉमन फंक्शन लिखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज responsible for compartmentalization of cytoplasm. It is responsible for compartmentalization of cytoplasm into luminal, LUMINAL, luminal and extra luminal space. It is responsible for compartmentalization of cytoplasm into luminal, LUMINAL, luminal and extra luminal space, luminal and extra luminal space। मतलब क्या है, देखिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और साइटोप्लाज्म में है, तो कुछ साइटोप्लाज्म का पार्ट इसके अंदर आ जाएगा ट्यूब के अंदर, वो ल्यूमिनल हो गया, और जो उसके बाहर है
वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो ल्यूमन के अंदर है वो ल्यूमिनल स्पेस हो गया, जो उसके बाहर है दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो पहला फंक्शन है। अगर आपको याद होगा तो इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ प्लाज्मोडेस्माटा जो कि कनेक्टिंग होता है एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में, और उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। वो जो डेस्मोटिब्यूल होता है, दैट डेस्मोटिब्यूल इज फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कैन बी बाय आरईआर और एसईआर। तो नेक्स्ट लिखिए, दे फॉर्म दे फॉर्म desmotubule they form desmotubule। desmotubule मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें नहीं लिखा हुआ है लिटरेचर में, लेकिन उसी चैप्टर का जब आप समरी पढ़ेंगे तो वहां पे ये मेंशन है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में इन्वॉल्व, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, फंक्शन ऑफ आरईआर, ठीक है। फंक्शन ऑफ आरईआर एक ही मेजर फंक्शन है, दैट इज इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। तो फंक्शन ऑफ आरईआर में, ठीक है, एक ही फंक्शन में है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड secretion of, it is involved in synthesis and secretion of protein। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा सेल देख रहे हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ आरईआर प्रेजेंट है, इससे आप क्या इंफरेंस ड्रॉ करेंगे? इससे आप ये इंफरेंस ड्रॉ करेंगे कि दिस सेल इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। तो लिख लीजिए, if a cell contains if a cell contains large amount of RER, if a cell contains large amount of RER, it means it means it is involved in, it means it is involved in synthesis and secretion of protein, it is involved in synthesis and secretion of protein। नेक्स्ट लिखिए, functions of ACR, functions of ACR, ठीक है। पहला लिखिए, it is site of, it is site of lipid synthesis, it is site of lipid synthesis, ठीक है। दूसरा लिखिए, it is site of glycogen synthesis, it is site of glycogen synthesis, ठीक है। तीसरा लिखिए, it is site of synthesis of steroidal hormones,
It is site of synthesis of steroidal hormones. जैसे होता है ना टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, आप लोग पढ़ेंगे अभी 12th में पढ़ेंगे, 11th में भी शायद पढ़ेंगे, ठीक है, जूलॉजी में। तो उसका साइट ऑफ सिंथेसिस यही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, it is involved in detoxification. It is involved in detoxification. अगर बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल चीज आ जाता है उसके रिमूवल में ये हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इट इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट लिखिए, it is involved in production of microbodies like peroxisome, glyoxysome, spherosome, etc. It is involved in production of microbodies like peroxisome, glyoxysome and spherosome. ठीक है, लिख लिया। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग इज गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कर रहे हैं, तो पहला हमने कर लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आता था हमारा गोल्जी बॉडी। इसको गोल्जी बॉडी क्यों कहते हैं? इसको गोल्जी बॉडी इसलिए कहते हैं कि इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्गी in 1898. Write down. It is known as Golgi body as it was first time observed by Camillo Golgi. In 1898. Camillo Golgi in 1898. तो जो गोल्जी बॉडी होता है ना, इट इज अ डार्क स्टेनिंग रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब हमेशा न्यूक्लियस के बगल में रहेगा। डार्क स्टेनिंग हो, जब आप इसको स्टेन करोगे तो डार्क कलर लेगा ये, ठीक है। और रेटिकुलर होता है, मतलब नेटवर्क टाइप से होता है, फ्लैट एंड डिस्क सिस्टर नहीं होता, उससे बना होता। तो भी आपको बताएंगे। राइट डाउन। इट इज अ डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर। इट इज अ डार्क स्टेनिंग reticular structure. It is a dark staining reticular structure present in the vicinity means bagal, present in the vicinity of nucleus. 1898 1898 लिखा तो है यहाँ, ठीक है। प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, कोई बात नहीं, 1898, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जब आपको स्टेन करना होता है गोल्जी बॉडी को, तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक स्टेन यूज करते हैं, दैट इज AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। टू स्टेन गोल्जी बॉडी AgNO3 is used. AgNO3 is used, ठीक है ना। जब आप देखेंगे गोल्जी बॉडी को सेल के अंदर, तो इसके अगल बगल में और कोई ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होता है। नो अदर ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ गोल्जी बॉडी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, अभी आगे बताएंगे फंक्शन। तो अगर मान लो इसके विसिनिटी में कोई
ऑर्गेनली प्रेजेंट होगा तो वो इंटरफेयर करेगा ट्रांसपोर्ट में, ब्लॉकेज हो जाएगा। तो इसलिए जिस जोन में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो हम कहते हैं कि रीजन अराउंड द गॉल्जी बॉडी इज नोन एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन एज नो अदर ऑर्गेनली। विसिनिटी मतलब बगल, तुम्हारे बगल में जो है वो तुम्हारे विसिनिटी में है, ठीक है, ओके। तो इसके अगल बगल में विसिनिटी में कोई अदर ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, एंड दैट इज रिफर्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। डाउन इन द विसिनिटी ऑफ गॉल्जी बॉडी, in the vicinity of Golgi body, no other organelles are present, and it is referred as zone of exclusion. It is referred as zone of exclusion, ठीक है। जब आप गॉल्जी बॉडी को देखोगे तो आप क्या देखोगे, गॉल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्न, ठीक है, ऐसे करके फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्न, ठीक है, with a diameter of 0.5 to 1 माइक्रोन, ठीक है। और ये जो सिस्टर्ने होते हैं, these cisternae are parallelly arranged or they are arranged parallel to one another and they are concentric, ठीक है। concentric का मतलब around a common center। तो write down Golgi body consists of flattened, Golgi body consists of flattened disc shaped sac और सिस्टर्ने, disc shaped sac और सिस्टर्ने, which are arranged parallel to one another और अरेंज की जगह स्टैक्ड लिख लो, which are stacked, STACKED, stacked parallel to one another, which are stacked parallel to one another and वीडियो ब्लर है, सबका ब्लर आ रहा है। रुको ऑपरेटर चेंज करता हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहना, मैं ऑपरेटर चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। क्या कर सकता हूँ भाई, रुक जाओ, गिव मी ए टाइम, गिव मी लिटिल बिट ऑफ टाइम, आई एम चेंजिंग ऑपरेटर। कोई फर्क पड़ा भाई लोग? नो अभी 1 मिनट वेट कर लो, 1 मिनट वेट कर लो, लो बैंडविड्थ आ रहा है, क्या करूं बताओ? रुको 1 मिनट वेट करो, ठीक हो जाएगा। डिजिटल इंडिया बन रहा है ना, डीजी अलग है, टल अलग है, डीजी और टल एक साथ नहीं आ रहे। CISTERNAE सिस्टर ने, ये न्यूक्लियस के विसिनिटी में होता है, इसके विसिनिटी में कोई और नहीं होता है। न्यूक्लियस तो अपने जगह पे होता है। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू, लिखिए, दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू वन अनदर
and they are arranged and they are arranged they are arranged concentrically. They are arranged concentrically. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। चलो मुबारक हो, क्लियर हो गया। ओके, नाउ दे आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली। दे आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। diameter of cistern is 0.5 to 1 micron. Diameter of cistern is 0.1 to 0.5 to 1 micron. ठीक है ना। अगर आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये जो गॉल्जी बॉडी है, दिस इज योर सिस्टर्न है। ये जो सिस्टर्न है, इट शोज क्लियर कट पोलैरिटी। ठीक है, देयर इज क्लियर कट पोलैरिटी। इट हैज cis or convex or forming face and trans or concave or maturing face। ठीक है, तो हम कहते हैं कि गॉल्जी बॉडी जो है उसमें देयर इज क्लियर कट पोलैरिटी। एक पोल जो है वो सिस फेस उसको कहते हैं, या कॉन्वेक्स फेस कहते हैं, या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं ट्रांस फेस या कॉन्केव फेस या मैच्योरिंग फेस। अब इसका मतलब क्या, अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये प्रोटीन जो है पैकेज फॉर्म में यहां पे डिलीवर हो जाएगा सिस फेस में। ठीक है, और फिर इसके बाद ये गोल्जी सिस्टर्ने के अंदर इसका मॉडिफिकेशन होगा। ये सिस्टर्ने के अंदर मॉडिफाई करेगा एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन ये फिर इधर रिलीज हो जाएगा मैच्योरिंग फेस में। तो सिस फेस से एंटर करता है और ट्रांस फेस पे रिलीज होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि देयर इज ए क्लियर कट पोलैरिटी इन गोल्जी बॉडी। ठीक है, मैंने कहा कि जब आप गोल्जी बॉडी को देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो गोल्जी बॉडी होता है इट शोज क्लियर कट पोलैरिटी। दो अलग अलग पोल हैं। एक फेस को हम लोग कहते हैं सिस या कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस, जहां पे सब्सटेंस डिलीवर होता है, और वो सब्सटेंस मॉडिफाई होने के बाद सिस्टर्ने में फिर रिलीज होता है ट्रांस फेस में। आप इसको ऐसे समझे सिंपल टर्म में, मान लीजिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कपड़े की फैक्ट्री है। इसका काम है कपड़ा बनाना। वो कपड़ा बना के यहां पे डिलीवर कर देगा सिस फेस में। वो कपड़ा इस सिस्टर्ने के अंदर शर्ट, टी शर्ट, पैंट, हाफ पैंट, व्हाटएवर जो भी बनना वो बनेगा और उसका ट्रांस फेस में डिलीवर होगा। ठीक है, समझ में आया? राइट डाउन। Golgi body shows clear cut polarity, that is there is cis or convex or forming face. There is cis, convex or forming face and trans, concave or maturing face. Trans, concave
और मैच्योरिंग फेज। ठीक है, substances are released at or delivered at substances are delivered at cis phase substances are delivered at cis phase and after modification in Golgi sister ने after modification in Golgi sister ने it is released at trans phase. It is released at trans phase. इसको जल्दी से बना लीजिए डायग्राम को, फिर आगे बढ़ते हैं। ना नेक्स्ट लिखिए फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, फर्स्ट लिखिए it is involved in cell secretion. It is involved in cell secretion, that is delivery of substance, to inter or intracellular targets. That is delivery of substance to inter or intracellular targets, माने बिटवीन द सेल और विद इन द सेल। जैसे कि इसको ऐसे समझो, प्रोटीन बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो प्रोटीन जो है गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई होगा और उसके बाद जहां के लिए बना है वहां पे वो डिलीवर हो जाएगा। दिस इज सेल सिक्रीशन। समझ में आया ये पॉइंट? हेडिंग इज फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, मैंने कहा डिलीवरी ऑफ सब्सटेंस टू इंटर और इंट्रासेलुलर टारगेट्स। ठीक है, लिख लिया? लिख लीजिए, ये हो गया। नेक्स्ट, it is site of glycosylation. It is site of glycosylation, that is addition of sugar. It is site of glycosylation, that is addition of sugar. GLYCOSYLATION. It is site of glycosylation, that is addition of sugar. So it is site of, अरे सुनने रिया, वीडियो नहीं सुनना है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वीडियो से क्या करना? हाँ तो लिखो ना। So
It is site of, so it is site of production of, it is site of production of, राहुल आवाज आ रही है? मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा, आपको बोर्ड नहीं देखना, आपको लिखना है तो लिखो ना, वीडियो का छोड़ो अभी. इट इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, glycolipid and glycoprotein. It is site of production of glycolipid, GLYCO, glycolipid and glycoprotein. मतलब लिपिड में शुगर का एडिशन, प्रोटीन में शुगर का एडिशन. दिस प्रोसेस इज ग्लाइकोसाइलेशन, एडिशन ऑफ शुगर. तो ये कहां पे होता है? गोल्जी बॉडी में होता है. इट इज साइट ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ शुगर, दैट इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, it is site of production of primary lysosome. It is site of production of primary lysosome, which is rich in hydrolytic enzymes, which is rich in hydrolytic primary lysosome, LYSOSOME, primary LYSOSOME, lysosome. Which is rich in hydrolytic, HYDRO, hydrolytic, LYTIC, hydrolytic enzymes. Which is rich in hydrolytic enzymes. एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, ACROSOME, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. कहां पे? स्पर्म पे, ह्यूमन स्पर्म के ऊपर. दैट इज नथिंग बट इट इज मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी. तो नेक्स्ट लिखिए, एक्रोसोम, ACROSOME, एक्रोसोम, ACROSOME, एक्रोसोम in Golgi body, acrosome in Golgi body, sorry, in human sperm, sorry, acrosome in human sperm is nothing but modified Golgi body. ठीक है, ओके. अब बोर्ड क्लियर दिख रहा है? वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट इज लाइसोसोम. थर्ड इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो तीसरा स्ट्रक्चर है, दैट इज लाइसोसोम. It is single membrane bound structure. Write down. It is single membrane bound structure. First time observed by
ऑब्जर्व्ड बाय, एक मिनट नाम लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Lysosome is rich in, lysosome is rich in hydrolytic enzymes, हाइड्रोलिटिक मतलब जो ब्रेक डाउन करता है सबसे निकला हाइड्रोलिसिस करता है, रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज, लाइपेज, डीएनएज, आरएनएज, एसिड फॉस्फेटेज एक्सेट्रा, प्रोटीएज, लाइपेज, डीएनएज, आरएनएज, acid phosphatase, etc. And these enzymes are active under, these enzymes are active under acidic pH. These enzymes are active under acidic pH. मतलब समझ में आया इसका कि इनको एक्टिव होने के लिए जो मीडियम का पीएच चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइसोम के अंदर मीडियम एसिडिक कैसे होगा, ताकि ये एंजाइम अंडर एसिडिक पीएच, अंडर एसिडिक पीएच, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे जो एंजाइम है ये सारे के सारे लाइसोम के अंदर प्रेजेंट है और इनको एक्टिव रहने के लिए क्या चाहिए, इनको एक्टिव रहने के लिए चाहिए एसिडिक पीएच। तब क्वेश्चन ये आता है कि एसिडिक पीएच अंदर कैसे आएगा। तो होता क्या है कि मेम्ब्रेन के ऊपर लाइसोम के हाइड्रोजन पंप्स होते हैं। क्या पंप होता है? हाइड्रोजन पंप। और ये जो हाइड्रोजन पंप है दे पंप H प्लस फ्रॉम सराउंडिंग इनसाइड द लाइसोम। तो अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन लाइसोम के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? मीडियम क्या हो जाएगा? एसिडिक। ये पॉइंट समझ में आया सबको? Write down. These enzymes are active under acidic pH. These enzymes are active under acidic pH. And acidic pH inside the lysosome, and acidic pH inside the lysosome is maintained various hydrogen pumps, various hydrogen pumps which actively pumps H plus, which actively pumps H plus inside the lysosome, which actively मतलब एनर्जी यूज करके, which actively pumps H plus, वही तो कह रहा हूं यार, which actively pumps is maintained with the help of
various with the help of various H plus pump present on membrane of lysosome it actively pumps it actively pumps H plus inside the lysosome which makes medium acidic next लिखिए lysosome is involved in सेल क्लीनिंग सफाई कर्मचारी है सेल का लाइसोसोम इज इन्वॉल्व इन सेल क्लीनिंग ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अगर किसी कारण से सेल के अंदर लाइसोसोम ब्रेक कर गया तो ये सारे एंजाइम रिलीज हो जाएंगे और ये सेल के कंटेंट को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे एंड दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज आल्सो रिफर्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल ठीक है थर्ड ऑन एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ मैडम एक्सीडेंटल ब्रेकेज ऑफ lysosome inside the cell results in digestion of cellular content and that's why lysosome is also referred as suicidal bag of cell lysosome is also referred as suicidal bag of cell ठीक है नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ लाइसोसोम नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ लाइसोसोम तो चार टाइप होते हैं लाइसोसोम के ठीक है प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम residual body and fourth is autophagic vesicle primary lysosome secondary lysosome residual body and autophagic vesicle ठीक है head on first primary lysosome it is produced by
It is produced by Golgi body. It is produced by Golgi body, and it is rich in hydrolytic enzymes. It is produced by Golgi body, and it is rich in hydrolytic enzymes. ठीक है, लिख लिया. नेक्स्ट इज सेकेंडरी लाइसोम. हाँ गौरांगी बताओ. Rich in hydrolytic enzyme. Rich in hydrolytic enzymes. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए सेकेंडरी लाइसोम. चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं. थैंक यू.